मेरे प्यारे भारत के नागरिकों को नमस्कार। मैं 7वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्ण संध्या पर देश विदेश में रह रहे सभी भारतीयों को उनकी खुशहाली और समृद्धि के लिए शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। भारत को स्वतंत्रता दिलाने वाले स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को राष्ट्र हमेशा याद रखेगा। मैं इस अवसर पर हमारे सशस्त्र सैनिकों, अर्धसैनिक और पुलिस वालों को उनकी समर्पित और सौजन्यपूर्ण सेवाओं के लिए बधाई देता हूं। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि आज एक संकल्प लें कि हम सब देश में शांतिपूर्ण वातावरण बनाने का प्रयास करेंगे जो देश के विकास के लिए आवश्यक है। यही प्रयास हमें एक विकसित देश बनाने में मदद करेगा। आज मैं आपसे राष्ट्रीय जागृति मिशन पर चर्चा करूंगा। My dear citizens of India, on the eve of the 60th Independence Day, I extend to you all at home and abroad my greetings and best wishes for your happiness and prosperity. Our nation will always cherish and be inspired by the contribution of our freedom fighters towards making India independent. On 9th August, I met many freedom fighters from all parts of the country, and in their eyes I could see the spirit of selfless sacrifice. There cannot be any other better living example for our youth to follow. On this occasion, we remember with gratitude the devoted and gallant services of our armed forces who are guarding our frontiers on the land, over the sea and in the air, and our paramilitary and police forces who are preserving our internal security and maintaining law and order. I am very happy that my previous Independence Day addresses have stimulated substantial debate and discussions. I have addressed both houses of the Parliament on the missions for an economically developed India. I feel that the time is ripe now for both houses of Parliament to debate and adopt a resolution that India will get transformed into a safe and economically developed nation before the year 2020. This unique action of giving the nation a precise and focused vision will inspire everyone, and in particular the youth. Therefore, the topic that I have selected for this address on the 60th Independence Day is the national awakening. Recently, the country had torrential rains in Andhra Pradesh, Gujarat and Maharashtra. The flood conditions have caused loss of life and property and immobilized economic activities. My heart goes out for the families who lost their near and dear ones and those in distress. My government is doing, in partnership with the state governments, everything possible to alleviate the pain of the people. Some parts of the country are experiencing drought conditions, and when some other regions are flooded. This has become a periodic phenomenon lacking any predictability. Once again, this clearly brings out the need for the interlinking of rivers for the effective utilization of surplus water in a balanced manner among all geographic regions with enlightened cooperation between the states and the center. We will now look at the national development scene. Let me now relate my suggestion for such a cooperative national missions required in many areas leading to a developed India by 2020. During my visit to all states and union territories, I have witnessed the actual development process, and there are several islands of success, a few of which I would like to share with you. These examples of our accelerating progress have direct impact on the day-to-day life of our farming communities, children and our youth, teachers, doctors and nurses, scientists, engineers and technicians, state institutions, business and industry. These examples also demonstrate
that the existence of an indomitable spirit to succeed with the confidence that we can do it across the length and the breadth of the India. Let us first start with the agriculture area. In the agriculture and farming sector, more than doubling the productivity of the rice and wheat in areas near RP Channel 5 in Bihar has been achieved through the TIFAC mission using innovative integrated farming and marketing methods. These results have spread to many areas through people's efforts and are applicable to the whole of Bihar, eastern Uttar Pradesh and other areas which have similar agroclimatic conditions. These regions could be transformed into the granaries of India. I have come across similar success stories in respect of doubling seed cotton productivity in Punjab when I visited Garibata village, where I met farmers. Also in the field of sugarcane cultivation in Vasantdada Sugar Institute, Pune has enabled farmers to increase the yield of sugarcane by 36%. These experiences can definitely be emulated by other sugarcane growing states. Our private sector has also made significant progress in food processing industries, whereas there is a need for rural farmers cooperatives in partnership with banking institutions on the pattern of Indian Farmers Fertilizer Cooperative Limited. While the essential necessity of networking of rivers has been brought out as a part of the drought and flood management, water harvesting is a very important need for every state while planning house construction. I have seen during my visit to Mizoram in the northeastern states, almost every house is being equipped with self-contained water harvesting system which provides adequate water supply throughout the year. These success stories clearly indicate that it is feasible to enhance the food grain output from the existing 200 million tons per annum to nearly 360 million tons per annum before 2020. This will also help in drastically reducing the number of people below the poverty line, a true indicator for an economically developed nation. Now I will talk about the education sector. Among many models of pre-primary school education with creative learning methodologies that emphasize the learning by doing, including the cultivation of hygiene, nutritional and sanitary practices, I have come across the work of Dr. M.R. Raju and his team in Vedamiram, Andhra Pradesh. This has inspired students to love their learning experience and has enriched their lives in school. At the primary and secondary school level, government municipal schools in Karnataka have introduced the accelerated learning model using computer-based animated courses. This is pioneered by the Asim Prabji Foundation, which has brought down dropouts from the schools substantially. NCERT has prepared the National Curriculum Framework under Professor Yaspal's leadership and modified the CBSE syllabus for promoting creative education at all levels through the application of learning by doing concept. Teachers training program based on the new syllabus of CBSE has been organized across the 25 cities using EduSat through video conferencing. 12,000 teachers have been trained so far through the interaction with the experts sitting in the NCERT studio in New Delhi. Recently, I witnessed the Ladakh model of Sarva Shiksha Abhiyan increasing the pass percentage at the 10th class level from 5% in 1998 to 50% in 2005 with the aim of promoting creative learning leading to a higher percentage of passes in the Phase 2 program. The Akshaya program of the Kerala state government is imparting computer education to 6 lakh adults and the advanced computing training program for 60,000 youth within a 2-year period, leading to high value employment for the youth. In higher education, a pioneering effort by the universities of Madras, Mumbai and Kolkata with the help of the Ministry of Human Resource Development has resulted in the creation of a virtual university system by offering 10 joint degree programs at undergraduate, postgraduate and PhD levels. The higher education system throughput has to increase from the existing 6% to 30% by 2020.
I am very confident that such initiatives, when applied across the country in the total education system, will enable us to realize near 100% literacy and employable skills among youth, leading to a knowledge society by the year 2020. The country will then have two national human resource cadres. The first one, skilled youth with specific world-class technical skills, and second, the knowledge professionals with higher education to take up leadership roles in research, development, and industrial missions. This global human resource will meet the needs of the quality human resource for India and for the whole world. Let me now narrate some of the innovative initiatives in medical care. During the last 3 years in Karnataka, a unique corporate healthcare medical scheme is in operation under the leadership of doctors of Narayana Hridayalaya in partnership with the Karnataka government. This is benefiting over 2 million members like farmers, craftsmen, artisans, and the small vendors. Members of this scheme who pay a nominal subscription of ₹10 per month receive full medical treatment for major ailments entirely free of cost. I have also come across a number of humanitarian missions giving free treatment to the poor. Among them, for example, a Little Heart Foundation for Children's Heart Ailments, Care Kidney Foundation for Kidney Ailments at Hyderabad, and the Patrician Cancer Center at Chennai for cancer treatment. There are several other initiatives of this nature showing the indomitable spirit of doctors, nurses, and paramedical staff. For example, Karunya Nilayam has initiated the process of screening of children in rural areas of Kerala so that they can provide total treatment to over 100 cancer-affected children every year free of cost. The Aravind Eye Hospital, Madurai, provides free treatment to 70 patients. We need to multiply such ventures to enable every citizen of the country to receive quality health care. As a spin-off from India's missile technology came lightweight calipers. These calipers have field proven through a number of camps spearheaded by Nizam Institute of Medical Sciences, Hyderabad. They have so far benefited more than 10,000 polio-affected children across the country. Mobile clinics are being increasingly deployed in the remote areas of Uttaranchal and other hilly regions for providing quality diagnostic and healthcare services to needy villages. Space technology has been extended to the healthcare sector. 34 specialty hospitals have been connected through ISRO's telemedicine network and are providing telemedicine services to over 140 remote locations all over the country. Our government hospital system, with its existence outreach, can symbiotically collaborate with the emerging private healthcare initiatives. This indicates that it is definitely feasible to achieve the missions of providing effective, affordable, and quality healthcare services to all the people of our country by the year 2020. Indian ICT industry is growing at about 28% per annum. This is definitely a strong indicator that the ICT industry requires a national mission to realize $200 million turnover by 2012. Job opportunities are expected to grow from 1 million to nearly 9 million direct jobs and 6 million indirect jobs in the construction, retail, and transportation industries by 2010. The government of India is creating a Pan-African e-network for connecting 53 African countries. In a similar way, India has proposed to extend the services to Myanmar, Vietnam, Laos, and Cambodia. Many state governments are in the process of implementing e-governance services and creating statewide area network across their states. I am happy to say that the Ministry of Communication and Information Technology has decided to invest ₹24,000 crores in 5 years for establishing an e-governance network and government to citizen services across the country within 4 years' time.
Through capacity building, job opportunities, better consumer protection laws and secure infrastructure, ICT would enable economic growth to higher levels of prosperity in India. Now let us look at the rural development. The Bharat Nirman program aimed at rural prosperity across the country is in a position with the outlay of Rs 174,000 crore for the period of 4 years. I am happy to find that there is a growing recognition of enhancing the rural prosperity through the providing urban amenities in the rural areas, that is PURA model. I have inaugurated the Periyar-Pura complex pioneered by Periyar Maniammai College of Technology for Women, Ballam, Tanjore, consisting of a cluster of 65 villages having a population of 1 lakh. The model of Pura complex has all the 3 connectivities: physical, electronic, and knowledge, leading to the economic connectivity. This has resulted in large-scale employment generation and creation of a number of entrepreneurs with the active support of 1,150 self-help groups. 200 acres of wasteland has been developed into a cultivatable land with innovative water management schemes. Villagers are busy in cultivation, planting jatropha herbal and medicinal plants, power generation using biomass, food processing with dedicated marketing centers. This model has emanated independent of any government initiative. I have also seen the other Pura models like Loni Pura in Maharashtra, the Chitrakoot Pura in Madhya Pradesh, and Bairaj Pura in Andhra Pradesh. These experiences can be emulated nationwide. We need 7,000 Puras all over the country. This movement can be multiplied by thousands of entrepreneurs, educational administrators, small-scale industries, and bankers with the support of government agencies, providing total economic prosperity to rural India by 2020. At village Kailapara on Sagar Island, Sundarbans, I saw a photovoltaic solar power plant of 120 kilowatt capacity, the largest off-grid plant in our country, established by the West Bengal Renewable Energy Development Agency in collaboration with the Ministry of Non-Conventional Energy Resources. It is providing 6 hours of electrical energy to 33 villages of Sagar Island. This model of standalone solar energy system should be replicated in many remote hilly areas and island territories. Now, I would like to talk about a very important subject, namely comprehensive national security. Peaceful and harmonious conditions in all parts of the country are essential for people to cooperate with one another for accelerated national growth. However, there are challenges to peace from across our geographical borders, from terrorism and violence, and from the scarcities created by rapidly depleting natural resources. These dynamic challenges call for special measures to ensure a comprehensive, integrated system of security which has 4 major components: territorial security, internal security, energy security, and economic security. Let us see the challenges to peace and the economic progress. Our nation and armed forces are well prepared to protect our territorial security. They are continuously being strengthened to deal with the new forms of warfare. Let me now come to an important aspect of security that is drawing the attention of the entire country and the world. The constant threat of low-intensity proxy war and terrorism has become a disturbing feature of national life. This constitutes the new phase of war. Dear citizens, this matter is of great concern to all of us. Therefore, I propose to share my thoughts with you on how we can face these challenges and resolve to eradicate this threat. What are the requirements to combat challenges to national interest? At the state level, greater and more effective coordinated decision-making ability is the most basic requirement. At individual level, a greater respect for traditional values and sense of social responsibility like love and respect for one's family and teachers and service to the neighborhood and community.
tolerance for authority are now absolutely essential. Above all, we as the people, individuals and especially institutions require increased ability to cooperate with one another, improving thereby our work, our personal relationship. While we have the basic structure in the form of law, police cadres, intelligence agencies and judicial system, we need to reinforce them with required updates with the code of conduct. Every citizen, every group, every religion and every political and executive system should allow the law to function without interference. To combat the challenges, I would like to discuss under the three broad areas of namely economic security through development with peace, citizen security, energy security, all this leading to comprehensive national security. I feel that accelerated development has to be integrated with peace missions. Such mission will have four major components, namely economic zone near international borders and line of control, social development in difficult areas, national level movement to eliminate the terrorism and citizen security. Presently, the areas close to the international border and line of control are not used for economic activity. The government may consider using the available land area for promoting economic activity with people's participation. The economic security of these border regions would in itself become complementary to the territorial security required in these zones. Social-minded people may be enabled to start educational, sports complexes and healthcare institutions in every difficult area in the country. I would like to share with the salient features of a typical model that has made a significant impact on social development. Jeevan Vidya experience. Jeevan Vidya is being practiced by Professor Ganesh Bagaria, IIT Kanpur, Professor Rajiv Sangal, Director, IT, Hyderabad, and their teams. This team is concerned about addressing the basic causes of major problems of violence, corruption, exploitation, domination, terrorism, and war. It has been found that violent and antisocial behavior, unless dealt with care and with professionalism, could aggravate the extreme behavior. Jeevan Vidya develops tolerance for ambiguity, uncertainty in human contact by enabling self-knowledge that understand harmony in the self and the entire existence. The academicians could bring about a marked change even among the inmates of jails through the use of these techniques. Jeevan Vidya is a teachable human value-based skill that can address inherent conflicts within the mind of the individual, within the families, in organization and in public life. Inner conflict is the very essence of violence. For example, with the skills imparted, it would be possible to reduce the overall period of secondary education from 25,000 hours of teaching to 20,000 hours, since the children become more responsible and productivity conscious. These experiments can be outreached to influence many people by developing networks using ICT through our educational system that needs to pay increasing attention to this aspect of human development. This process of imparting self-knowledge would promote a learning atmosphere where this whole movement of inquiry into the knowledge, into oneself, into the possibility of something beyond knowledge would bring about naturally a psychological revolution. From this comes inevitably a totally different order in human relationship and therefore society as a whole. The intelligent understanding of the process itself can bring about a profound change in the consciousness of mankind. Dear friends, now I would like to discuss a very important aspect of how can we provide a sense of security for our citizens. At the Governors' Conference held in June 2005, 4 governors echoed that the organized group formation of extreme ideologies and its spreading tendency in various parts of the country that has organized
originated from the lack of timely implementation of learned reforms and resolving certain ideological differences in time. Also, during my visit to certain states, I found there is a need for the district administration to exercise greater influence in certain forest areas and territories. There also is a threat from the extremist group in some parts of the northeast regions. This points to the immediate need for coordinated countermeasures, including effective negotiation for restoring normalcy in these areas, coupled with the economic development within the next 3 to 5 years in the mission mode. On 17 July 2006, at the King Edward Memorial Hospital, I met some of the injured in the Mumbai bomb blast, which is the result of the most lethal element of low-intensity war. I felt that the pain of many who lost their hearing ability, their limbs fractured and amputated, and spinal injuries leading to permanent disability. It was reassuring that when I addressed the Indian Merchant Chamber on the same day, many of the participants volunteered to provide all help needed for rehabilitation. The state government rose to the occasion to provide financial relief for medical support obtained from private hospitals. Later, I participated in the memorial service organized for the people who lost their lives. During the 2-minute silence, the whole city of Mumbai expressed its deep sorrow and determination to combat the terrorism with unity of minds. We must do this with great sense of urgency, for when evil minds combine, good minds have to work together and combat. Similar acts of mindless violence have taken place in the country for more than 2 decades, and this phenomena is continuously increasing. My government, the members of the parliament, and the state legislatures are quite concerned about this and are considering how to address these issues of citizen security for formulating a national approach to eradicate terrorism in all its forms. This is an issue of national concern. We should transcend individual differences of opinion and address it with a sense of unity. This is the need of the hour. Let me give a plan of action for citizen security through national campaign to eradicate terrorism. I believe the time has come to synergize our multiple agencies to forecasting and dealing with terrorist activities. We need to evolve a national campaign to eradicate terrorism, NCET, in our nation with mission-oriented integrated management structure and people's participation. It has been recognized that terrorism does not take place without any planning. This may be originating from a master plan with global umbilical connectivity extending to homes or hotels and guest houses. NCT will facilitate working together of the intelligence and security machinery both at the state and the central level to achieve the desired objectives. The NCET will be an alert and dynamic movement which would prevent hotels and homes being used as a shelter by terrorists and extremists. We have to create a secure atmosphere where citizens who wish to cooperate in the peace mission must themselves feel secure. These citizens can participate in the important function of promoting their own safety and the security of their neighborhood. This challenge is particularly acute in areas where there is a floating population in transition through residential areas, hotels, and other similar places that could unknowingly be used for wrong purposes. The state may consider introduction of national ID cards and important national e-governance grid for all government to government, government to citizens, business to business, and business to citizen transaction within the next 2 years' time. It is essential to create special monitoring methodology for unusual and abnormal banking transactions. Today, with the introduction of a computerized banking and computerized communication system, the world of data mining is very advanced to detect such anomalies in real time. The judiciary must consider the creation of a fast-track judicial process for settling terrorism-related cases. Now I would like to talk about energy independence. A very clear relationship exists between energy security and national security.
For if there are adequate energy supplies, or if energy supply cannot be afforded, then the economy of the country will be severely affected. In the nuclear fuel area, with cooperation of certain states, the country should aim to mine enough uranium. The vast thorium resources of the nation should be harnessed by our scientists and technologists. With cooperation from all other sectors of science, technology and industry in India, I am confident that we have the capability to build our own thorium-based reactors. This will enable us to be a self-reliant, secure and independent in nuclear energy. In a similar manner, we know that we are running out of oil and natural gas based on fossil fuels. Heavy dependence on imported oil and gas, and especially its use in the transportation industry, has already impacted the nation's economy. The nation has to gear up for enhanced production of coal and clean coal technologies. We depend on oil to the extent of 114 million tons every year, 75% of which is imported and used almost entirely in the transportation sector. Hence, we have to concentrate on the biodiesel and renewable energies. I have advocated a national mission in biodiesel involving all stakeholders such as farmers, industrialists, researchers, agriculture, scientists, oil companies, central and state government agencies for realizing 60 million tons per year of biodiesel by 2030, which would be 20% of the anticipated oil consumption then. In harnessing solar energy, we now need to set up infrastructure and capabilities for nanotechnology revolution that has the potential to find solution for new forms of solar cells, more efficient, less costly, and abundantly available. Our goal by 2030 is to generate 50,000 megawatt of power from renewable energy sources. Dear friends, let me share with you a thought from Stephen Hawking at this stage with so much of natural and man-made disaster facing planet Earth. He is considered as one of the world's leading theoretical physicists who discovered the superstring theory. He asked an open question in June 2006. How can the human race survive the next 100 years? When he received well over 20,000 mixed responses on email, he admitted that he does not have an answer. You have heard me today on the eve of 60th Independence Day. I am sure that you share my strong belief that with the strength of our youth and our civilizational heritage, we can together find an answer. Hence, let me conclude with the mission ahead. The time has come, therefore, for the political, administrative, scientific and industrial communities to cooperate intensely with each other, take stock of the entire situation in all sectors of security comprehensively, and emerge with a vision, integrated mission, policies, plans and programs for such a comprehensive security for the nation to be safe, prosperous and happy. How shall we realize this vision? What are the immediate steps that we need to take to realize this vision? Let us work together to evolve 3 initiatives. In continuation with my earlier discussion, I will be suggesting to the government and both Houses of Parliament to formulate a citizen security bill with a national campaign for eradication of terrorism. 2. The formulate an energy independence bill. 3. Adopt a resolution that India will be transformed into a safe, prosperous, happy and socio-economically a developed nation before the year 2020. There is consequently a need for a sustained period of debate and decision making in the Parliament and government in these areas, leading to comprehensive national security. Only in an environment of stable peace, the nation can concentrate on social and economic development. Now, I will administer and vote for the youth of the nation. I realize I have to set a goal in my life. To achieve the goal, I will acquire knowledge. I will
I will work hard. And when the problems occurs, I have to defeat the problem and succeed. Can you do it? Okay. Next one. As a youth of my nation, I will work and work with courage to achieve success in all my tasks and enjoy success of others. You do it? Okay. Next point. I shall always keep myself, my home, my surroundings, neighborhood, and environment clean and tidy. Will you do it? Very good. I realize righteousness in the heart leads to beauty in the character. The beauty in the character brings harmony in the home. Harmony in the home will bring order in the nation. Order in the nation leads to peace in the world. What do you say? Where it starts, all of them starts from? Or starts from righteousness in the heart. Okay. Next one. I will lead an honest life, free from all corruption, and will set an example for others to adapt a righteous way of life. Difficult? Difficult. You will do it, Okay. Next one. I will light the lamp of knowledge in the nation and ensure that it remains lit forever. Last one. I realize whatever work I do, if I do the best, I am contributing towards achieving vision of developed India before 2020. Wish you all the best. Dear citizens, let me once again greet you all on the eve of the 60th Independence Day. I take this opportunity to wish all the nations and citizens of the world peace and prosperity. May God bless you all. Jai Hind. मेरे प्यारे भारत के नागरिकों, मैं 60वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर देश विदेश में रह रहे सभी भारतीयों को उनके मेरे प्यारे भारत के लिए शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। भारत को स्वतंत्रता दिलाने वाले स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को राष्ट्र हमेशा याद रखेगा और उनसे प्रेरित होता रहेगा। 9 अगस्त को मैं देश के भिन्न भिन्न भागों से आए अनेक स्वतंत्रता सेनानियों से मिला। उनकी आंखों में मुझे निस्वार्थ सेवा भाव दिखाई दिया। हमारे युवाओं के लिए इससे बेहतर सजीव उदाहरण और कोई नहीं हो सकता।
इस अवसर पर हम जल, थल और आकाश में हमारी सीमाओं की रक्षा करने वाली अपनी सशस्त्र सेनाओं और आंतरिक सुरक्षा, कानून और व्यवस्था कायम रखने वाले अर्धसैनिक और पुलिस बलों की समर्पित और शौर्यपूर्ण सेवाओं को कृतज्ञतापूर्वक याद करते हैं। मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरे पिछले स्वतंत्रता दिवस संबोधनों ने व्यापक वाद विवाद और चर्चाओं को प्रेरित किया। मैंने आर्थिक दृष्टि से विकसित भारत के लिए मिशन विषय पर संसद के दोनों सदनों को संबोधित किया। मैं महसूस करता हूं कि यही समय है जब हमारी संसद के दोनों सदन चर्चा करें और ये संकल्प लें कि भारत 2020 से पहले एक सुरक्षित और आर्थिक रूप से विकसित राष्ट्र बन जाएगा। इस अनूठे कार्य से राष्ट्र को एक स्पष्ट और संकेंद्रित संकल्पना हासिल होगी और सभी, विशेषकर युवा वर्ग, उससे प्रेरित होगा। अतः संबोधन के लिए 60वें स्वतंत्रता दिवस पर मैंने राष्ट्रीय जागृति विषय चुना है। हाल ही में देश में आंध्र प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में मूसलाधार बारिश हुई है। बाढ़ से इन क्षेत्रों में जान माल का काफी नुकसान हुआ है और आर्थिक गतिविधियां ठप हो गई हैं। मेरा मन उन परिवारों के लिए व्यथित हो उठता है जिन्होंने अपनों को खोया और जो मुसीबत में हैं। मेरी सरकार राज्य सरकारों के साथ मिलकर उन लोगों की तकलीफ दूर करने के यथासंभव प्रयास कर रही है। देश के कई भागों में सूखा पड़ा हुआ है और कई क्षेत्र बाढ़ की चपेट में हैं। अब ऐसा बार बार होने लगा है और इनके बारे में कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। एक बार फिर राज्यों और केंद्र के बीच सक्रिय सहयोग से लाभकारी प्रयोग के लिए सभी भौगोलिक क्षेत्रों में अतिरिक्त जल के उपयोग के लिए नदियों को जोड़ने की जरूरत है। मैं 2020 के विकसित भारत के लिए बहुत से क्षेत्रों में आवश्यक ऐसे सहयोगात्मक राष्ट्रीय मिशनों हेतु अपने सुझाव देना चाहूंगा। राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों की अपनी यात्रा के दौरान मैंने वास्तविक विकास प्रक्रिया और सफलता के अनेक उदाहरण देखे। उनमें से कुछ को मैं आपके साथ बांटना चाहूंगा। हमारी इस तीव्र प्रगति के इन उदाहरणों का कृषक समुदाय, बच्चों, युवाओं, शिक्षकों, डॉक्टरों और नर्सों, वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और तकनीकीविदों, राज्य संस्थाओं, कारोबार और उद्योग के रोजमर्रा के जीवन पर सीधा प्रभाव पड़ा है। इन उदाहरणों में भारत के कोने कोने में सफलतापूर्वक कामयाब होने के अदम्य साहस का भावपूर्ण विश्वास के हम कर सकते हैं झलकता है। कृषि और खेती के क्षेत्र में ट्राइफेक्ट मिशन के जरिए बिहार में आरपी चैनल 5 के नजदीक नवीन संगठित खेती और विपणन की विधियों के प्रयोग से चावल और गेहूं की उपज दुगनी से ज्यादा हो गई। लोगों के प्रयास से ऐसे ही और नतीजे मिलने शुरू हो गए हैं। ये समूचे बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश और ऐसी ही कृषि जलवायु परिस्थितियों वाले अन्य क्षेत्रों में भी लागू हो सकते हैं। ये क्षेत्र भारत के अन्न भंडार के रूप में परिवर्तित हो जाएंगे। जब मैं पंजाब के घेरी भुट्टर गांव में गया और वहां किसानों से मिला तो मुझे बिनौले की उपज दुगनी होने की ऐसी ही कहानियां सुनने को मिली। इसके अलावा पुणे में वसंत दादा शुगर इंस्टीट्यूट के सहयोग से महाराष्ट्र में गन्ने के उत्पादन में 36% वृद्धि हो गई। ऐसे अनुभव को गन्ना उगाने वाले अन्य राज्य भी निश्चित रूप से अपना सकते हैं। हमारे निजी क्षेत्र ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में उल्लेखनीय उन्नति की है, जबकि ग्रामीण कृषक सहकारी संस्थाओं को भारतीय कृषक उर्वरक सहकारी लिमिटेड की पद्धति के आधार पर बैंकिंग संस्थाओं के साथ साझेदारी करने की जरूरत है। सूखे और बाढ़ प्रबंधन के एक भाग के रूप में नदियों को जोड़ने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है, परंतु प्रत्येक राज्य में मकानों की योजना बनाते समय जल संचयन करना बहुत जरूरी है। उत्तर पूर्वी राज्यों की यात्रा के दौरान मैंने मिजोरम में देखा कि लगभग सभी घरों में जल संचयन प्रणाली की व्यवस्था है और इससे वर्ष भर सबको पूरा पानी मिलता है। सफलता की इन कहानियों से ये साफ पता चलता है कि 2020 से पहले खाद्यान्नों का उत्पादन मौजूदा 200 मिलियन टन प्रतिवर्ष से बढ़ाकर लगभग 360 मिलियन टन करना संभव हो सकेगा। इससे गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे लोगों की संख्या में कमी आएगी और यही आर्थिक रूप से विकसित एक राष्ट्र की पहचान होगी। रचनात्मक शिक्षा पद्धति वाले जिन पूर्व प्राथमिक स्कूलों के बहुत से मॉडलों में स्वच्छता, पोषण और साफ सफाई की आदतें डालकर सीखने पर जोर दिया जाता है, उनमें से मैंने पेडामीराम आंध्र प्रदेश में श्री M.R. राजू और उनके दल की गतिविधियों को देखा, जो विद्यार्थियों को उनके शिक्षा अनुभवों से लगाव और स्कूल में अपने जीवन को ज्ञानयुक्त बनाने के लिए प्रेरित करती हैं। प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय स्तर पर मैंने कर्नाटका के सरकारी नगर पालिका विद्यालयों में कंप्यूटर आधारित सजीव पाठ्यक्रमों का प्रयोग करते हुए तीव्र शिक्षण मॉडल देखा है। ये कार्य अजीम प्रेमजी फाउंडेशन ने शुरू किया है। इन तकनीकों के प्रयोग से पढ़ाई बीच में ही छोड़ने वाले बच्चों की संख्या में काफी कमी आई है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद ने प्रोफेसर यशपाल के नेतृत्व में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा तैयार की है और अपने आप सीखने के तरीके से सभी स्तरों पर रचनात्मक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय विद्यालय शिक्षा बोर्ड के पाठ्यक्रम में संशोधन किया है। एडुसेट का प्रयोग करते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 25 शहरों में केंद्रीय विद्यालय शिक्षा बोर्ड के नए पाठ्यक्रम पर आधारित
शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया है। नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के स्टूडियो में विशेषज्ञों के साथ बातचीत के द्वारा 12,000 अध्यापकों को प्रशिक्षित किया गया है। हाल ही में मैंने सर्व शिक्षा अभियान का लद्दाख मॉडल देखा, जिसके दूसरे चरण के कार्यक्रम के अंतर्गत रचनात्मक शिक्षण और उच्च उत्तीर्ण प्रतिशतता के लक्ष्य के साथ 1998 में 10वीं कक्षा की परीक्षा केवल 5% को मिली सफलता को 2005 में 50% तक बढ़ाने में कामयाबी प्राप्त हुई। केरल राज्य सरकार का अक्षय कार्यक्रम 6 लाख प्रौढ़ों को कंप्यूटर शिक्षा और युवाओं को बेहतर रोजगार दिलाने के लिए 60,000 युवाओं को उन्नत कंप्यूटर प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है। उच्च शिक्षा में मानव संसाधन विकास मंत्रालय की सहायता से मद्रास विश्वविद्यालय, मुंबई विश्वविद्यालय और कोलकाता विश्वविद्यालय के अग्रणी प्रयास ने स्नातक, स्नातकोत्तर और पीएचडी स्तर पर 10 उपाधि कार्यक्रम आरंभ करके एक वर्चुअल विश्वविद्यालय प्रणाली की रचना की है। उच्चतर शिक्षा प्रणाली में मौजूदा 6% को 30% तक बढ़ाने का प्रयास करना होगा। मुझे विश्वास है कि अगर पूरे देश की शिक्षा प्रणाली में ऐसे प्रयास किए जाएं तो हम 100% साक्षरता हासिल कर लेंगे और सभी युवाओं को रोजगार योग्य कौशल भी प्रदान कर देंगे। इससे 2020 तक हम एक ज्ञानवान समाज बन जाएंगे। तब देश में 2 राष्ट्रीय मानव संसाधन संवर्ग होंगे। पहला, विशेष विश्व स्तरीय तकनीकी कौशल युक्त युवा और दूसरा, अनुसंधान, विकास और औद्योगिक मिशनों का नेतृत्व करने के लिए उच्च शिक्षित पेशेवर। ये विश्व मानव संसाधन भारत और समूचे विश्व की श्रेष्ठ मानव संसाधन की जरूरत को पूरा करेगा। अब मैं आपको चिकित्सा सेवा के क्षेत्र के कुछ नवीन प्रयासों की जानकारी देना चाहूंगा। कर्नाटका में कर्नाटका सरकार की साझेदारी में नारायण हृदयालय के डॉक्टरों के नेतृत्व में पिछले 3 सालों से एक अनूठी कॉर्पोरेट स्वास्थ्य चिकित्सा योजना चल रही है, जिससे किसान, शिल्पकार, कारीगर और छोटे दुकानदार जैसे असंगठित क्षेत्र के 20 लाख लोगों को फायदा हो रहा है। हर महीने 10 रुपए का न्यूनतम सदस्यता शुल्क देने वाले इस योजना के सभी सदस्य गंभीर बीमारियों का बिल्कुल मुफ्त पूरा चिकित्सीय लाभ उठा रहे हैं। मैंने बच्चों के हृदय रोगों के लिए लिटिल हार्ट फाउंडेशन हैदराबाद में, गुर्दे की बीमारियों के लिए केयर किडनी फाउंडेशन और चेन्नई में कैंसर के इलाज के लिए पेटरसन कैंसर सेंटर जैसे गरीबों का मुफ्त इलाज करने वाले अनेक मानवीय मिशन भी देखे हैं। ऐसे अनेक प्रयास हैं जो डॉक्टरों, नर्सों और अर्ध चिकित्सीय कर्मियों के अदम्य उत्साह को प्रदर्शित करते हैं। उदाहरण के लिए कारुण्य निलयम ने केरल के ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों की जांच की प्रक्रिया शुरू की है, ताकि वे प्रतिवर्ष कैंसर से पीड़ित 100 बच्चों का निःशुल्क उपचार करवा सकें। अरविंद आई हॉस्पिटल मदुरई में 30 रोगियों को इलाज के लिए पैसे खर्च करने पड़ते हैं, जबकि 70 रोगियों का मुफ्त उपचार किया जाता है। हमें देश के प्रत्येक नागरिक को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने के लिए ऐसे प्रयासों को कई गुना बढ़ाना होगा। भारत की मिसाइल प्रौद्योगिकी के अप्रत्यक्ष उत्पाद के रूप में हल्के कैलिपर का निर्माण किया गया था। निजाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज हैदराबाद के नेतृत्व में अनेक शिविरों के जरिए किए गए परीक्षणों के दौरान ये कैलिपर उपयोगी साबित हुए हैं। अब तक इनसे देश भर के 10,000 से ज्यादा पोलियोग्रस्त बच्चों को लाभ पहुंचा है। उत्तरांचल राज्य और अन्य पर्वतीय इलाकों के सुदूर क्षेत्रों के निर्धन ग्रामीणों को श्रेष्ठ नैदानिक और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए लगातार मोबाइल क्लिनिक उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। स्वास्थ्य क्षेत्र को अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी प्रदान की गई है। इसरो के दूर चिकित्सा नेटवर्क से 34 सुपर स्पेशलिटी अस्पताल जोड़े गए और ये अस्पताल देश भर के 140 सुदूर क्षेत्रों को चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध करवा रहे हैं। अपनी व्यापक पहुंच के जरिए हमारे सरकारी अस्पताल व्यवस्था भी उभरते हुए निजी स्वास्थ्य अस्पतालों के साथ सहयोग कर सकती है। इससे संकेत मिलता है कि वर्ष 2020 तक हमारे देश के सभी लोगों को प्रभावी, वहनीय और श्रेष्ठ स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने का मिशन हासिल करना संभव होगा। भारतीय सूचना और संचार प्रौद्योगिकी उद्योग प्रतिवर्ष लगभग 28% की दर से बढ़ रहा है। ये निश्चित रूप से एक मजबूत संकेत है कि भारतीय सूचना और संचार प्रौद्योगिकी उद्योग को 2012 तक 200 करोड़ का व्यवसाय करने के लिए एक राष्ट्रीय मिशन बनाना चाहिए। 2010 तक निर्माण, खुदरा और परिवहन उद्योगों में उपलब्ध वर्तमान 10 लाख प्रत्यक्ष नौकरियों की संख्या बढ़कर लगभग 90 लाख प्रत्यक्ष और 60 लाख अप्रत्यक्ष नौकरियां होने की उम्मीद है। भारत सरकार 53 अफ्रीकी देशों को जोड़ने के लिए एक पैन अफ्रीकी नेटवर्क का निर्माण कर रही है। इसी प्रकार भारत म्यांमार, वियतनाम, लाओस तथा कंबोडिया को अपनी सेवाएं देने का प्रस्ताव कर रहा है। बहुत सी राज्य सरकारें ई शासन सेवाएं क्रियान्वित करने और राज्यों में स्वान यानी राज्यव्यापी क्षेत्र नेटवर्क का निर्माण करने की प्रक्रिया में हैं। मुझे ये कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने
5 वर्ष के भीतर देश में ई शासन नेटवर्क स्थापित करने के लिए 24,000 करोड़ रुपए निवेश करने का फैसला किया है। क्षमता निर्माण, नौकरी के अवसर, बेहतर उपभोक्ता सुरक्षा कानून और सुरक्षित बुनियादी सुविधाओं के माध्यम से सूचना और संचार प्रौद्योगिकी भारत के आर्थिक विकास को समृद्धि के आश्चर्यजनक स्तर पर पहुंचा देगी। भारत निर्माण कार्यक्रम का लक्ष्य 4 वर्ष की अवधि में 1,74,000 करोड़ के परिव्यय द्वारा देश के गांवों को समृद्ध बनाना है। मुझे ये जानकर खुशी हुई है कि ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं उपलब्ध करवाने वाले पुरा के मॉडल के जरिए ग्रामीण समृद्धि को बढ़ाने को लगातार मान्यता मिल रही है। मैंने पेरियार मन्यम्माई महिला प्रौद्योगिकी कॉलेज वल्लम तंजौर द्वारा शुरू किए गए 1 लाख आबादी वाले 65 गांवों के एक समूह पेरियार पुरा परिसर का उद्घाटन किया। इस मॉडल पुरा परिसर में सभी 3 भौगोलिक, इलेक्ट्रॉनिक और ज्ञान संयोजन और उनसे होने वाला आर्थिक संयोजन शामिल है। इससे 1,150 स्व सहायता समूहों के सक्रिय सहयोग से व्यापक रोजगार वृद्धि और अनेक उद्यमी स्थापित हो सकेंगे। 200 एकड़ बंजर भूमि को नवीन जल प्रबंधन योजनाओं से खेती योग्य बनाया गया है। ग्रामवासी कृषि, जट्रोफा, औषधीय और चिकित्सीय पौधों की खेती और रोपण, बायोमास के प्रयोग से ऊर्जा उत्पादन, विपणन केंद्रों के साथ खाद्य प्रसंस्करण में व्यस्त हैं। इस मॉडल का निर्माण किसी भी सरकारी प्रयास के बिना किया गया है। महाराष्ट्र में लोनीपुरा, मध्य प्रदेश में चित्रकूटपुरा और आंध्र प्रदेश में बाईराजूपुरा जैसे दूसरे पुरा मॉडल भी हैं। संपूर्ण राष्ट्र को सफलता के इन उदाहरणों का अनुकरण करना चाहिए। हमें सारे देश में 7,000 पुराओं की आवश्यकता है। हजारों उद्यमियों, शैक्षिक प्रशासकों, लघु उद्योगपतियों और बैंकरों और सरकारी एजेंसियों के सहयोग से इस प्रयास को कई गुना बढ़ाया जा सकता है और ग्रामीण भारत को 2020 तक आर्थिक रूप से समृद्ध बनाया जा सकता है। कैलापाड़ा गांव, सागर द्वीप, सुंदरबन, पश्चिम बंगाल में मैंने अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी द्वारा स्थापित हमारे देश का सबसे विशाल ग्रिड मुक्त 120 किलोवाट क्षमता का एक फोटोवोल्टेइक ऊर्जा संयंत्र देखा। ये सागर द्वीप के 33 गांवों को 6 घंटे बिजली प्रदान कर रहा है। इस मॉडल को बहुत से सुदूर पहाड़ी क्षेत्रों और द्वीप क्षेत्रों में अपनाया जा सकता है। तीव्र राष्ट्रीय विकास के लिए लोगों में आपसी सहयोग हेतु देश के सभी हिस्सों में शांति और सद्भावनापूर्ण हालात होना जरूरी है, परंतु सीमा पार से आतंकवाद और हिंसा और तेजी से खत्म होते जा रहे प्राकृतिक संसाधनों से होने वाली कमी से इस शांति के सम्मुख अनेक चुनौतियां खड़ी हो गई हैं। इन अहम चुनौतियों के लिए राष्ट्र और प्रत्येक नागरिक हेतु सुरक्षा की एक ऐसी व्यापक समेकित व्यवस्था सुनिश्चित करने की जरूरत है जिसके 4 प्रमुख घटक होंगे: क्षेत्रीय सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक सुरक्षा। क्षेत्रीय सुरक्षा। हमारा राष्ट्र और हमारी सशस्त्र सेनाएं हमारी क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए पूरी तरह तैयार हैं। उन्हें युद्ध के नए नए तरीकों से लड़ने के लिए लगातार मजबूत बनाया जा रहा है। आंतरिक सुरक्षा। आइए अब सुरक्षा के एक महत्वपूर्ण पहलू पर चर्चा करते हैं जो सारे देश और विश्व का ध्यान खींच रहा है। कम तीव्रता वाला अप्रत्यक्ष युद्ध और आतंकवाद का लगातार खतरा राष्ट्रीय जनजीवन में अशांति का कारण बनता जा रहा है। इससे युद्ध का नया चेहरा सामने आ रहा है। प्यारे नागरिकों, ये हम सभी के लिए चिंता का विषय है। इसलिए मैं आपको अपने ये विचार बताना चाहता हूं कि हम किस तरह इस चुनौती का सामना कर सकते हैं और इस खतरे को समाप्त करने के लिए संकल्प ले सकते हैं। राज्य स्तर पर व्यापक और अधिक प्रभावी समन्वित निर्णय क्षमता सबसे बड़ी जरूरत है। व्यक्तिगत स्तर पर परिवार और शिक्षकों के प्रति प्रेम और सम्मान, पड़ोसियों और समुदाय के प्रति सेवा, प्रशासन के प्रति सहिष्णुता जैसे परंपरागत मूल्यों के प्रति सम्मान और सामाजिक दायित्वों की भावना भी बहुत जरूरी हो गई है। सबसे पहले हमें व्यक्तिगत और विशेषकर संस्थाओं के रूप में एक दूसरे से सहयोग करने की क्षमता बढ़ाने और उससे अपने कार्य और निजी संबंधों को घनिष्ठ बनाने की आवश्यकता है। पर्याप्त कानून, प्रशिक्षित पुलिस और खुफिया एजेंसियां और न्याय प्रणाली के रूप में हमारे पास बुनियादी ढांचा है, परंतु आचार संहिता के साथ साथ हमें जरूरी सुधार करके इसे मजबूत बनाना होगा। प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक समूह, प्रत्येक धर्म और प्रत्येक राजनीतिक और प्रशासन व्यवस्था को कानून को बिना किसी हस्तक्षेप के काम करने देना चाहिए। अगर हम सभी मिलकर प्रण करें तो कुछ ही वर्षों में भारत आतंकवाद के खतरे से मुक्त हो जाएगा। इन चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए मैं इन 3 व्यापक क्षेत्रों के तहत चर्चा करना चाहूंगा। क, शांति सहित विकास द्वारा आर्थिक सुरक्षा। ख, नागरिक सुरक्षा। और ग, ऊर्जा सुरक्षा। इन सभी से व्यापक राष्ट्रीय सुरक्षा होगी। क, शांति मिशन सहित विकास द्वारा आर्थिक सुरक्षा। तीव्र विकास को शांति मिशन के साथ जोड़ना चाहिए। ऐसे मिशन के 4 प्रमुख घटक होंगे:
अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा के निकट आर्थिक क्षेत्र, दुर्गम क्षेत्रों में सामाजिक विकास, आतंकवाद को समाप्त करने के लिए राष्ट्रीय स्तर का प्रयास और नागरिक सुरक्षा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा के पास आर्थिक क्षेत्र। इस समय अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा के निकट के क्षेत्रों को आर्थिक कार्यकलापों के लिए प्रयोग में नहीं लाया जाता। सरकार लोगों की भागीदारी से आर्थिक क्रियाकलाप बढ़ाने के लिए उपलब्ध भूमि के प्रयोग पर विचार कर सकती है। इन सीमा क्षेत्रों की आर्थिक सुरक्षा इन क्षेत्रों में आवश्यक क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी बन जाएगी। दुर्गम क्षेत्रों में सामाजिक विकास। सामाजिक लोगों को देश के प्रत्येक दुर्गम क्षेत्र में शैक्षिक, खेल परिसर और स्वास्थ्य देखभाल संस्थाएं शुरू करने के लिए सक्षम बनाया जा सकता है। मैं एक ऐसे विशेष मॉडल की प्रमुख विशेषताएं आपको बताना चाहूंगा जिससे सामाजिक विकास पर उल्लेखनीय प्रभाव पड़ा। जीवन विद्या अनुभव। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर के प्रोफेसर राजीव बगारिया तथा IIIT हैदराबाद के प्रोफेसर राजीव संगल और उनकी टीम द्वारा जीवन विद्या संकल्पना प्रयोग में लाई जा रही है। ये स्कीम अपराध, आतंकवाद, हिंसा, युद्ध, भ्रष्टाचार, शोषण और प्रभुत्व की मुख्य समस्याओं के प्रमुख कारणों पर ध्यान देती है। उन्होंने पाया कि हिंसक और समाज विरोधी व्यवहार के साथ अगर सावधानी और कुशलता से न निपटा जाए तो इससे व्यवहार और ज्यादा हिंसक हो सकता है। जीवन विद्या ने स्वयं और समूचे विश्व के बीच संबंध की जानकारी से मानव आचरण में अस्पष्टता और अनिश्चितता के प्रति सहिष्णुता विकसित की है। शिक्षाविदों ने पाया कि वे इन तकनीकों के प्रयोग से कैदियों में उल्लेखनीय बदलाव लाने में कामयाब रहे हैं। जीवन विद्या एक सिखाया जा सकने वाला गुर है जो किसी व्यक्ति के मन में परिवारों के बीच, संगठनों और संस्थानों में तथा सार्वजनिक जीवन में दिखाई देने वाले द्वंद्वों को समझ सकता है। अंतर्द्वंद ही हिंसा का प्रमुख कारण है। उदाहरण के लिए इस हुनर से माध्यमिक शिक्षा में 25,000 घंटों की शिक्षण अवधि को कम करके 20,000 घंटे करना संभव होगा, क्योंकि इससे बच्चे अधिक जिम्मेदार और प्रदर्शन के प्रति चेतनावान हो जाते हैं। इन उदाहरणों को हमारी शिक्षा पद्धति के द्वारा सूचना संचार प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल से एक नेटवर्क विकसित करके बहुत से लोगों को प्रभावित करने के लिए इसे उन्नत बनाया जा सकता है। मानव विकास के इस पहलू पर ध्यान देने की जरूरत है। ऐसे कौशल युक्त प्रबुद्ध नागरिक सुंदरता की खोज, सत्य की खोज, जीने के लिए संघर्ष रहित राह और मनुष्य के संपूर्ण उद्यम को पहचानना सीख लेते हैं। स्वज्ञान प्राप्ति की प्रक्रिया शिक्षापूर्ण वातावरण को बेहतर बनाएगी, जहां ज्ञान में स्वयं में ज्ञान से परे किन्हीं अन्य संभावनाओं के प्रति जिज्ञासा से एक स्वाभाविक मनोवैज्ञानिक क्रांति आ सकती है। इस अस्तित्व की भी खोज करनी होगी। इससे मानव संबंधों और संपूर्ण समाज में स्वयं एक बिल्कुल अलग व्यवस्था स्थापित होती है। इस प्रक्रिया की गहन जानकारी से मानव चेतना में गंभीर परिवर्तन लाया जा सकता है। नागरिकों की सुरक्षा और परिरक्षा। प्रिय मित्रों, अब मैं एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू पर चर्चा करना चाहूंगा कि हम अपने देश के नागरिकों में सुरक्षा की भावना कैसे ला सकते हैं। वर्ष 2005 में आयोजित राज्यपाल सम्मेलन में 4 राज्यपालों ने भूमि सुधार समय पर कार्यान्वित न होने और कुछ वैचारिक मतभेदों को न सुलझाने से अतिवादी विचारधाराओं वाले संगठित समूहों और देश के विभिन्न हिस्सों में फैल रही ऐसी प्रवृत्तियों की बात दोहराई थी। अन्य कई राज्यों की यात्रा के दौरान भी मैंने महसूस किया कि कुछ वन प्रदेशों और क्षेत्रों में जिला प्रशासन को अपना प्रभाव बढ़ाना होगा। मुझे उत्तर पूर्वी क्षेत्र के कुछ भागों में आतंकवादी संगठनों से खतरा है। इस स्थिति को देखते हुए अगले 3 से 5 वर्ष के भीतर मिशन पद्धति से इन क्षेत्रों में आर्थिक विकास के साथ साथ सामान्य जनजीवन की बहाली और समन्वित जवाबी कार्रवाई करने की आवश्यकता है। 17 जुलाई 2006 को मैं किंग एडवर्ड मेमोरियल अस्पताल में मुंबई बम कांड के घायलों से मिला, जो निम्न स्तरीय युद्ध का सबसे घातक परिणाम है। मैंने उन बहुत से घायलों की पीड़ा को महसूस किया जिन्होंने अपनी श्रवण शक्ति खो दी है, जिनके हाथों पैरों की हड्डियां टूट गईं या हाथ पैर कट गए हैं और जिनकी रीढ़ की हड्डी में चोट ने उन्हें जीवन भर के लिए अपंग बना दिया है। मुझे खुशी है कि जब मैंने इंडियन मर्चेंट चेंबर को संबोधित किया तो वहां उपस्थित अनेक लोगों ने घायलों के पुनर्वास के लिए आवश्यक सभी सहायता देने की जिम्मेदारी ली। राज्य सरकार भी निजी चिकित्सकों से इलाज करवा रहे घायलों को वित्तीय सहायता देने के लिए आगे आई। मैंने उसके बाद इस हादसे में जान गंवाने वालों की स्मृति में आयोजित एक शोक सभा में भाग लिया। 2 मिनट का मौन रख सारे मुंबई शहर ने मृतकों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की और विचारों की एकता के साथ साथ आतंकवाद से मुकाबला करने का दृढ़ संकल्प किया। हमें आतंकवाद को गंभीर खतरा समझते हुए इस पर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि जब दुष्टात्माएं मिलती हैं तब सज्जनों को एकजुट होकर उनका मुकाबला करना चाहिए। 2 दशक से भी अधिक समय से देश में हिंसा का एक ऐसा ही अविवेकपूर्ण दौर चल रहा है
और हिंसक घटनाएं निरंतर बढ़ती जा रही हैं। मेरी सरकार, सभी संसद सदस्य और राज्य विधानमंडल इस बारे में काफी चिंतित हैं और विचार कर रहे हैं कि नागरिक सुरक्षा के मुद्दों पर एक राष्ट्रीय दृष्टिकोण तैयार कर एक निश्चित समय सीमा में हर प्रकार के आतंकवाद को जड़ से उखाड़ने के लिए कैसे कार्रवाई करें। ये राष्ट्रीय चिंता का विषय है। हमें अपने व्यक्तिगत मतभेदों को भुलाकर एकजुट होकर इससे निपटना होगा। यही समय की मांग है। आइए मैं आपको एक कार्य योजना बताऊं। आतंकवाद मिटाने के लिए राष्ट्रीय अभियान यानी NCET। मैं मानता हूं कि आतंकवादी गतिविधियों का समय से पहले पता लगाने और उनसे निपटने वाली एजेंसियों को संगठित करने का समय आ गया है। आतंकवाद मिटाने के लिए हमें लोगों के योगदान और एक मिशनोन्मुख संगठित प्रबंधन ढांचे वाला एक आक्रामक राष्ट्रीय अभियान शुरू करना होगा। ये तय है कि आतंकवादी गतिविधियां बिना योजना के संपन्न नहीं होती। इसकी मुख्य योजना का आधार वैश्विक संबंधों के साथ साथ घर, होटल और गेस्ट हाउस तक है। NCET गुप्तचर और सुरक्षा एजेंसियों को राज्य और केंद्र स्तर पर एक साथ मिलकर काम करने और अपेक्षित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सुविधाएं प्रदान कर सकती है। NCET एक सजग और गतिशील प्रणाली होगी जो होटलों और घरों को आतंकवादी नेटवर्क से जुड़े लोगों का आश्रय स्थल बनने से रोकेगी। हमें एक सुरक्षित माहौल तैयार करना होगा जहां शांति मिशन में सहयोग देने वाले नागरिक स्वयं को सुरक्षित महसूस कर सकें। तब नागरिक अपनी और अपने आसपास की सुरक्षा बढ़ाने के महत्वपूर्ण कार्य में अपना योगदान दे सकते हैं। आवासीय क्षेत्र, होटल और ऐसे ही अनेक स्थानों के लिए जहां लोग आते जाते रहते हैं, ये काफी बड़ी चुनौती है क्योंकि उन स्थानों को गलत उद्देश्यों के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। राज्य अगले 2 वर्ष की अवधि में राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करने, सरकार से सरकार, सरकार से जनता, व्यवसाय से व्यवसाय और व्यवसाय और जनता के बीच लेनदेन के लिए राष्ट्रीय ई-शासन ग्रिड कार्यान्वित करने पर विचार कर सकता है। बैंक के असाधारण और असामान्य लेनदेन के लिए विशेष मॉनिटरिंग प्रणाली तैयार करना बहुत जरूरी है। अब बैंकों और संचार प्रणालियों में कंप्यूटर का उपयोग प्रारंभ होने और आंकड़ों को खोजने की उन्नत प्रणाली से किसी भी गड़बड़ी का पता लगाना आसान हो गया है। आतंकवाद से जुड़े मामले शीघ्र निपटाने के लिए न्यायपालिका को एक तेज प्रक्रिया तैयार करने पर जरूर विचार करना चाहिए। ऊर्जा सुरक्षा से ही ऊर्जा स्वतंत्रता। ऊर्जा सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा के बीच एक बहुत गहरा संबंध है। यदि ऊर्जा आपूर्ति अपर्याप्त हो अथवा ऊर्जा आपूर्ति करना संभव न हो तो देश की अर्थव्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हो जाएगी। न्यूक्लियर ईंधन। देश को कुछ राज्यों के सहयोग से पर्याप्त यूरेनियम खनन का लक्ष्य तय करना चाहिए। हमारे वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकी विदों को देश में उपलब्ध विशाल थोरियम संसाधनों का विदोहन करना चाहिए। मुझे विश्वास है कि विज्ञान, प्रौद्योगिकी और उद्योग के सभी क्षेत्रों के सहयोग से भारत के पास थोरियम आधारित रिएक्टर स्थापित करने की क्षमता है। ये हमें न्यूक्लियर ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर, सुरक्षित और स्वतंत्र बनाएगा। जीवाश्म ईंधन। हम जानते हैं कि इसी तरह तेल और गैस भी कम होते जा रहे हैं। आयातित तेल और गैस पर बहुत अधिक निर्भरता और विशेषकर परिवहन उद्योग में इसके प्रयोग से देश की अर्थव्यवस्था प्रभावित होने लगी है। देश को कोयला उत्पादन में वृद्धि और कोयला परिष्करण प्रौद्योगिकी के निर्माण के लिए तैयारी करनी होगी। तेल सुरक्षा के लिए ऊर्जा का उत्पादन। हम तेल पर इतना अधिक निर्भर करते हैं कि हमें हर वर्ष 114 मिलियन टन तेल की आवश्यकता होती है, जिसका 75% आयात किया जाता है और जो अधिकतर परिवहन क्षेत्र में प्रयोग में लाया जाता है। हमें बायोडीजल और अक्षय ऊर्जा पर ध्यान देना होगा। इसलिए मैंने बायोडीजल के लिए एक राष्ट्रीय मिशन का सुझाव दिया है जिसमें किसान, उद्योगपति, अनुसंधानकर्ता, कृषि वैज्ञानिक, तेल कंपनियां, केंद्र और राज्य सरकारें इत्यादि सभी को शामिल करके वर्ष 2030 तक 60 मिलियन टन प्रतिवर्ष की दर से बायोडीजल प्राप्त किया जा सके, जो उस समय हमारी अनुमानित तेल खपत का 20% होगा। अक्षय ऊर्जा। सौर ऊर्जा हासिल करने के लिए अब हमें नैनो प्रौद्योगिकी क्रांति के लिए बुनियादी ढांचा और क्षमता स्थापित करने की आवश्यकता है। इस प्रौद्योगिकी में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध, कम खर्चीले और अधिक सक्षम नए किस्म के सोलर सेल विकसित करने की क्षमता है। हमारा लक्ष्य वर्ष 2030 तक अक्षय ऊर्जा स्रोतों से 50,000 मेगावाट ऊर्जा उत्पादन करना है। इस समय जब हमारी पृथ्वी अनेक प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाएं झेल रही है, मैं स्टीफन हॉकिंग के विचार आपको बताना चाहूंगा। वे विश्व के अग्रणी सैद्धांतिक भौतिक शास्त्री माने जाते हैं। उन्होंने सुपर स्ट्रिंग सिद्धांत की खोज की है। जून 2006 में उन्होंने सभी से एक प्रश्न पूछा था, मानव जाति अगले 100 वर्ष तक कैसे बची रह सकती है? जब उन्हें मिले जुले लगभग 20,000 उत्तर प्राप्त हुए तो उन्होंने माना कि उनके पास इस प्रश्न का उत्तर नहीं है।
आज 60वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आपने मुझे सुना। मुझे पक्का पता है कि आप भी मेरे इस विश्वास से सहमत होंगे कि अपनी सभ्यता की विरासत और युवा शक्ति के साथ मिलकर हम समाधान खोज निकालेंगे। अब मैं भावी मिशनों के बारे में बताकर अपनी बात समाप्त करता हूं। समय आ गया है कि राजनीतिक, प्रशासकीय, वैज्ञानिक और औद्योगिक समुदाय एक खुशहाल, समृद्ध और सुरक्षित राष्ट्र के लिए आपस में घनिष्ठ सहयोग करें, सुरक्षा के सभी क्षेत्रों में स्थिति का पूरा जायजा लें और व्यापक सुरक्षा के लिए एक संकल्पना, समेकित मिशन, नीतियां, योजनाएं और कार्यक्रम तैयार करें। हम इस संकल्पना को कैसे साकार कर सकते हैं? इस संकल्पना को साकार करने के लिए हमें तत्काल कौन से कदम उठाने चाहिए? आइए सबसे बुनियादी जरूरतों पर कार्य करें। मैं संसद के दोनों सदनों को सुझाव दूंगा कि वे पहला, नागरिक सुरक्षा कानून आतंकवाद की समाप्ति के लिए राष्ट्रीय अभियान सहित तैयार करें। दूसरा, ऊर्जा आत्मनिर्भरता बिल तैयार करें। और तीसरा, एक प्रस्ताव पारित करें कि भारत को वर्ष 2020 से पहले एक सुरक्षित, समृद्ध, खुशहाल और सामाजिक और आर्थिक रूप से विकसित राष्ट्र में बदल दिया जाएगा। संसद और सरकार को इन क्षेत्रों में विचार विमर्श और निर्णय लेने के लिए काफी समय देने की जरूरत है ताकि व्यापक राष्ट्रीय सुरक्षा स्थापित हो सके। केवल स्थायी शांति के माहौल में ही राष्ट्र सामाजिक और आर्थिक विकास पर ध्यान दे सकता है। अब मैं राष्ट्र के युवाओं को एक 7 सूत्री शपथ दिलाऊंगा। 7 सूत्री शपथ। मैं मानता हूं कि मुझे अपने जीवन में एक लक्ष्य तय करना है। लक्ष्य प्राप्त करने के लिए मैं ज्ञान हासिल करूंगा, मेहनत करूंगा और जब कोई समस्या आएगी तो उस पर विजय प्राप्त करके सफल बनूंगा। अपने राष्ट्र का एक युवा होने के नाते मैं अपने सभी कार्यों में सफल होने के लिए हिम्मत से काम करूंगा और दूसरों की सफलता पर प्रसन्न होऊंगा। मैं हमेशा अपने घर, अपने परिवेश, अपने आसपास और पर्यावरण को स्वच्छ और सुव्यवस्थित रखूंगा। मैं मानता हूं सदाचार से चरित्र निश्चल बनता है, निश्चल चरित्र से घर में मेलजोल रहता है, घर में मेलजोल से राष्ट्र व्यवस्थित रहता है और व्यवस्थित राष्ट्र से विश्व में शांति आती है। मैं ईमानदार और भ्रष्टाचार से मुक्त जीवन व्यतीत करूंगा और सदाचारपूर्ण जीवन अपनाने के लिए स्वयं दूसरों के समक्ष उदाहरण प्रस्तुत करूंगा। मैं देश में ज्ञान का प्रकाश फैलाऊंगा और कोशिश करूंगा कि हमेशा फैलाता रहूं। मैं मानता हूं कि यदि मैं अपना हर एक कार्य ठीक से करूं तो मैं 2020 तक एक विकसित भारत बनने के मिशन को साकार करने में अपना योगदान दे सकूंगा। प्यारे देशवासियों, मैं एक बार फिर 60वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आप सबको बधाई देता हूं। मैं इस अवसर पर विश्व के सभी राष्ट्रों और नागरिकों के लिए शांति व समृद्धि की कामना करता हूं। ईश्वर आप सब पर कृपा बनाए रखें। जय हिंद।